This is getting boring. We are all puppets on a string, Mr. Tenhauser. You are nothing but a pawn in my new narrative. Did we seriously just step out of a phone booth? We did. Wait, there is another way? I don't have to answer that. What's it like on the other side? Different. Hard to describe. Just try. How does it feel? The transition, I mean. Hans, we have no time for that right now. Please, I need to know. Well, you can imagine it as a rift, a junction in space-time. Your mind enters a stage of near transcendence. There are no thoughts, no words, no sounds or visions, no sense of self. And suddenly, bam, you see a myriad of possibilities exploding right in front of you. You have to fill me in on the details later. I want to know everything. Listen, I came to you because I see something in you. You are different. Please help me to get home. And help your people by stopping that woman. I don't think she knows of the dangers she's going to unleash. Your world is going to collapse. Everything will collapse. Just look, we need to stop her. But how? She's insane. We need to come up with a quantum discriminator somehow. I don't want to be here at all. Yet here you are. Sorry, I need to take a short rest. We could go to my room. That would actually be awesome. If that's cool with you. Follow me. Okay, I went over your plans, and I think I get the idea. It's pretty mind-boggling, but it could work. We need to improvise here and there. I found some scrap metal to roughly model a frame for the device. Let's get it started then. I'm afraid there are a few integral components that need to be swapped in, though. Okay, what are we looking for? First, we need a source of energy, a very strong source. Second, a particle accelerator. That's going to be a tough nut to crack. Third, a potent coolant. The whole thing could blow up otherwise. Number 4, last but not least, an interface to control the device. Any kind of peripheral will do. Okay, how do we begin? The order doesn't really matter. I'll go to the village. Maybe I can find some substitutes for the missing parts. Good, just bring them over. I'm sure I can patch them together somehow. Let's do this. Thank you, Hans. I'd already be dead if it wasn't for you. Oh, you. It wasn't that bad. You are awesome. I just wanted you to know that I'm eternally grateful to have met you. All things considered, dying may not be as bad as I always thought it might be. Don't you say that. Even if I don't make it, you need to stop her. Promise? I'm beginning my search right now. ओके सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का फिर से एक बार इन दिस अमेजिंग गेम ट्रूबरब्रूक। तो हम लोग आ पहुँचे हैं चैप्टर 4 में। ओके तो गाइस सीन क्या चल रहा है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसके पहले वाले जो चैप्टर था, मतलब चैप्टर 3 जो था द टेनहाउजर गेट, उसमें गाइस क्या हुआ था कि हम लोग एक ओल्ड माइन वाली जगह पे आ पहुँचे थे। एंड हम लोग उस ओल्ड माइन जो केव था, जो डिग था पूरा, हम लोग उसके अंदर गए एंड काफ़ी सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर की विद आवर फ्रेंड ग्रेचिन, जो लड़की थी उसके साथ। लेकिन जैसे जैसे हम आगे गए, जैसे हमने एक दरवाज़ा खोला, हम अंदर गए तो हमें एक पोर्टल दिखा, एक ऐसा पोर्टल जो हमें एक दूसरे कोई तो वर्ल्ड में पहुंचा सकता है। एंड उधर एक बंदा था, ये जो बंदा है ये हमें उधर मिला था वो पोर्टल के पास। तो वो कुछ तो पता नहीं ठीक कर रहा था, ट्राई कर रहा था कि वापस जाने का। तो ये जो बंदा है ये कोई तो पोर्टल टाइम मशीन में से आया है ये पर्टिकुलर जगह पे। तो बाद में क्या हुआ, जो ग्रेचिन है, जो लड़की है, उसने हमें धोखा दिया। जैसे ही उसने वो पोर्टल देखा, तन पता नहीं उसके दिमाग में क्या चीज़ जगी।
तो उसने अपनी बंदूक निकाली एंड उसने हम दोनों को बोला कि दफ़ा हो जाओ, इधर से निकल जाओ। दैन उसने ऐसा धोखा दिया एंड उसके बाद हम दोनों अभी साथ में है, मैं और ये बंदा। तो अभी हमारे पास ये पूरा, जैसा आप देख पा रहे हो, बहुत सारे मशीन्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं एंड हमें इसे फिक्स करनी है। जैसे इसने 4 चीज़ें मेंशन की है, वो चारों चीज़ें हमें कलेक्ट करके इससे हमें इसके घर पहुंचाना है वापस, मतलब डेडलाइन के पहले। इसका भी कोई तो डेडलाइन है, इससे पहले हमें इसे पहुंचाना है टाइम मशीन या तो पोर्टल के थ्रू। तो यही सीन है गाइस। एंड अगर आपने चैप्टर 3 नहीं देखा देन ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया लिंक। तो ठीक है गाइस, फ़िलहाल आप ये देखिए चैप्टर 4। बने रहिए मेरे साथ ताकि आप सब लोग को और मज़ा आए कि क्या होने वाला है आगे। तो अभी जो है गाइस, हमें विलेज में जाके चीज़ें ढूंढनी है हमारे दोस्त के लिए। तो पहले देखते, इंटरेक्ट करते। I don't even know where to Okay. begin. Don't worry, you know it in theory. Now, the quantum discriminator emits a coherent T-trion beam into the portal. Projecting a metaphasing trajectory matrix. Then the projected tachyon pulses allow us to modulate the frequency in such a fashion that... A rift in space-time. This is sensational. I thought you'd like it. ओके, तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो सर के ऊपर से जा रही है। पता नहीं आप लोग के सर के ऊपर से भी जा रही होगी कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ टर्म्स। ठीक है ठीक है। अभी हम लोग 1 मिनट का इस 1 मिनट, अरे बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे इंटरेक्ट करने के लिए। तो ठीक है, ठीक है। फ़िलहाल तो हमें बाहर ही जाना है, मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा बाहर जाना, विलेज में जाना एंड उधर जाके चीज़ें एक्सप्लोर, मतलब कलेक्ट करना, वो 4 चीज़ें जो हमें चाहिए। बहुत टाइम बाद जो है हम इस रिसेप्शनिस्ट से मिल रहे हैं, ये इधर की जो ओनर है वैसे देखा जाए तो। इस दरवाजे के अंदर क्या है, क्या राज छुपा है इस दरवाजे के अंदर? खुल नहीं रहा। Locked. और ये है इसकी बेटी, कब से बैठी है देख रही है टीवी। Hi, Lainey. What's cracking? They are sharing the Great Twilight Area Celebration Marathon today. 12 hours of bliss in a row. They're having the ever so riveting town fair outside. Wouldn't you like to go out to the real world once in a while? The real world is in there. Can't you see? There is ice cream and cotton candy waiting outside. I'll think about it. But for now, I need to keep on. क्या हमें इसे बाहर निकालना है? She's back in her parallel universe. नहीं, ठीक है। I've already. ये क्या लिया हमने? I don't want to take this with me. ठीक है, अब ये चलता है बाहर। There's a brown tube inside. I could use it for the quantum discriminator. The kid will be traumatized for her entire life if I just disassemble her only friend. I don't think I can do this. ओके, तो जो चीज़ हमें चाहिए वो इस पर्टिकुलर टीवी के अंदर है मौजूद एंड अभी तो हम नहीं ले सकते क्योंकि ये जो बच्ची है ये इधर बैठी है एंड अगर हमने इसके सामने कुछ भी किया तो ऑब्वियसली फंस जाएंगे। She's back in a trance. कुछ करना पड़ेगा। She's back in her parallel universe. ठीक है, देखते हैं। फ़िलहाल हम आगे चलते हैं एंड इसके पास जाके पूछते क्या है। Truda? So, Professor, did you take a look-see around the area? You could definitely say so. You may call off the police. How come? I've got my notes back. But the inspector is already on his way. Then just call him off in person if he's early. As you wish. ओके, I would like to ask you something. Oh yes, of course. Does the name Lazarus Taft ring a bell with you? Haft. Oh yes, indeed. Doppelkopf player. If you ask me, he's a sham.
Ripped my guests off to the last penny. Shady type. You better not get involved with him. Oh, well, I think I already. Well. Never mind. I'll be leaving then. Make yourself at home. ओके तो टैफ्ट जिसका ये नाम ले रहा था लजारस टैफ्ट, ये वही बंदा है जो मेरे होटल रूम में लेटा हुआ है, मस्त आराम कर रहा है। तो ये वही बंदा है, उसका नाम है टैफ्ट। तो अरे क्या सुंदर नज़ारा है इस विलेज का। जैसे इसने बोला था कि कोई तो फेयर चल रहा है बाहर, एंड काफ़ी टाइम बाद जो हम कह सकते हैं इस विलेज में रोशनी आई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा क्राउड है। वरना ये जो टाउन है काफ़ी खाली सा रहता है, बहुत लोनली सा रहता है। एंड ऊपर जो है नॉर्दर्न लाइट्स है, इसे नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं, यस ठीक है। अभी बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं, बहुत सारे लोग हैं, इंजॉय कर रहे हैं। Mr. Tannhauser? Step right up. ठीक है। Hello. How do you know my name? It's a small town. Penelope Hades. My sister and I run the boat rental over at the lake. Okay, so are there any prices? How much for the ticket? So, are there any prices? prizes? Our first prize is an all-day boat ride on the Truberbrook. How much for a ticket? One ticket, 50 pfennigs. But I'm afraid all tickets have been sold. Bummer. I'm sorry. I'll be leaving then. ठीक है चलो। Every ticket's a winner. No blanks, guaranteed. नहीं टिकट्स I'll be leaving. टिकट्स तो है ही नहीं, सोल्ड आउट हो चुकी है। ये पॉपकॉर्न वाले के पास चलते हैं, पॉपकॉर्न वाले ही है आई गेस। The mere Cotton thought of candy. cotton candy makes me ओके shiver. ओके ओके ओके, The real thing is just gross. कॉटन कैंडी है। Out of competition. It's a shooting gallery for kids. ठीक है, इसके पास चलते हैं गिटार वाले के पास। Patience, just a moment, pal. अच्छा, ये थोड़ा सा वार्म अप कर रहा है। हाँ, अपने चाचा जी के पास चलते हैं जो पहले हम मिले थे चैप्टर 2 में, पता नहीं 1 में। Good to see you. The pleasure is all mine. How is Claus doing? He's resting. My loyal Claus. क्लॉस ये वही कैट है जिसे हमने ढूंढा था, एंड हमने ढूंढने के बाद इसे दिलाया था। तो क्लॉस कहीं पे तो खो गई थी वो जो कैट है, एंड हमने उसे ढूंढा एंड देन इसको दिलाया। तो ये बहुत खुश हो गया, एंड उसके बाद से हमारी और इसकी काफ़ी अच्छी जम चुकी है, बन रही है। तो आर यू एंजॉइंग द फेस्टिविटीज़? हैव यू एवर हर्ड द नेम लजारस? ऐसे ही पूछते हैं। Have you ever heard the name Lazarus? Lazarus. Taft. Yes, a real good for nothing. It's not that I don't like strangers, especially if they come as tourists to my beautiful Truberbrook, but I was suspicious of this. Mr. Taft, right from the beginning, if you ask me, you better not mingle with him. Oh, well, I think I already. Well, सब लोग बोल रहे हैं कि लैज़रस स्टाफ जो बंदा है जो मेरे होटल रूम में अभी लेटा हुआ है, उसके साथ ज़्यादा बातचीत मत करो, उसके साथ जो है ज़्यादा घुल मिलो मत। सब लोग ये बोल रहे हैं, तो पता नहीं क्यों बोल रहे हैं ऐसा, जो भी है लेट्स सी। are you enjoying the festivities? Yes, take a look around. All these lights, the beautiful music. This is my Truberbrook in all its splendor and glory. ठीक है, I need to be on my way. चलो अभी इसके पास चलते हैं। I'll have a cone of roasted almonds, please. A cone of roasted almonds right away. There you are, sir. ठीक है, रोस्टेड आलमंड्स हमें मिल चुके हैं। अब कहाँ चलेंगे? A leaden trophy. Like a trophy made out of lead. Step right up! Step right up! Wanna put your bronze to the test? Is there a prize to be won? Scores! The winner of the night gets a trophy. Oh, okay. Consider me sold. ओके। कितने पॉइंट्स आए? अरे 3। Right. That was, not so bad. Just between the two of us. You could use a little dose of vitamins, don't you think? Always remember,
A healthy body equals a healthy mind. ठीक है, तो 5 में से हमें 3 पॉइंट्स मिले उस पर्टिकुलर हैमर बैश से। आई एम नॉट श्योर उसे क्या बोलते एग्जैक्टली। मैंने देखा है काफ़ी गेम जोन्स में, हम जब जाते कहीं पे मॉल्स में कहीं पे ये रहते हैं गेमिंग जोन में। ये क्या है? Beautiful here, ain't it? Very. What's a sailor man doing out here in the sticks? Well, I don't like water that much. I'm just so happy to be here with both of my feet on dry land. But aren't those stereotypical sailor's clothes you were wearing? So? So you have a fear of water? Aye. Thalassophobia. It all started when I was a little boy, back home, on a sweet summer's day. I was swimming in the lake when my Uncle Ulf suddenly cannonballed in. I would always remember these two massive cheeks rapidly closing in. To be honest, it's still haunting me today. I nearly drowned back then. Later I realized that was the day I developed this terrible, terrible fear of everything deeper than a puddle. Okay, why did you become a sailor man if you're scared of water? If I may ask, why did you become a sailor man if you're so scared of water? I asked this myself many times. Well, my mother insisted that it would be best for Fears me my to face fears. my fears. So naturally, I became a sailor man. This is so बहुत ही बढ़िया। confusing. Walk a mile in my shoes. What happened to your leg? Well, that happened on my second job at the piano transportation company. I don't really want to go into details, but thanks to the mercy of a rueful instrument manufacturer, I got me this nice new leg. And due to a timely taken disability insurance, I now may enjoy a quite decent invalidity pension, far away from the stormy sea. That's a nice story. Or is it a sad story? I can't decide. I think I'm needed elsewhere. Take care! ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों से हमने बातें की, काफ़ी सारे स्टॉल्स जो है हमने देखे, क्या क्या चीज़ें उधर अवेलेबल है, एंड जो चीज़ें हमें चाहिए फ़िलहाल हमें मिली नहीं है। This bucket seems to have been hung here for purely decorative reasons. ठीक है, तो अभी हम चलते हैं आगे क्योंकि इधर तो हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं। ठीक है, लेट्स सी इधर कैसा माहौल है। इस तरफ तो कुछ, अरे क्या बात है, ये स्टॉल वैसे बहुत बंद रहता था, मतलब ये भी खुल चुका है, इसमें भी कुछ तो है। काफ़ी सही लग रहा है, मतलब पीछे का जो बैकग्राउंड है बहुत अमेजिंग लग रहा है ना, सनसेट वाला फील आ रहा है। बहुत ही सुंदर है। ठीक है, इधर क्या है? इस बॉक्स में कुछ मिल सकता है हमें? लॉक्ड। Paddleboat rental. 1 hour. कुछ तो है नीचे, क्या है ये? That's a ticket for the raffle. This must be my lucky day. ओके, एक टिकट मिली है हमें, शायद से ये वही टिकट तो नहीं है जो पहले वाले स्टॉल में हमने देखा था। फिशिंग रॉड ले लेते। My fishing rod. It's still here. I promised Trudy to bring it back. ओके, ठीक है, अभी हम, ठीक है, अभी कहाँ जाना है हमें? अच्छा, हम लोग और ऐसे जा सकते हैं लेफ्ट साइड में। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो, I don't even know देखते where to हैं go. इस तरफ अभी क्या है पता नहीं, शायद से हम लोग जा पा रहे हैं। I don't even know where to जा go. क्यों नहीं पा रहे? नहीं जा पा रहे हम उधर। Step right up. Every ticket's a winner. No blanks. ओके, First prize is an all-day boat ride on the Truberbrook. ठीक है, तो सब लोग इधर आ खड़े हैं एंड पता नहीं क्या है इधर। ये टिकट दिखाते हैं इसको। See?
I found a ticket. Now look at that. You're a lucky fella. Now let's see what fortune has in store for you. Okay. Are you ready? This is your prize. A can of Cat food. cat food. Generously provided by the Truberbrook Advertisers Association. Oh my. Thanks, I guess. Well, enjoy. ये कैट फूड हमें मिला है. अभी ये कैट फूड हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? नो आइडिया. ये कौन है? ये बंदा है बंदी है? बंदी लग रही है. एक बात कर लेते इससे, क्या सीन चल रहा है? Nice evening for Okay. isn't it? Eerie. Eerie. There's something in the You air. smell it? Can you smell it? Spruces. Spruces, firs, pines. I was always bad at telling conifers apart. Where spruces prickle, firs just tickle. Fir? That's Tanne in German. Just like my name. Never thought about it. Why? What's your name? Tannhauser. We'd pronounce it Tannhäuser with an umlaut. German roots? Yes, my grandpa. ओके तो ये कोई तो नॉर्मल, कोई तो टूरिस्ट टाइप या कोई भी ऐसे ही वॉक करने के लिए या सनसेट का मज़ा लेने के लिए इधर आई है. एंड एक छोटा सा डंबल लेके वो एक्सरसाइज कर रही है. These things on the ground, we call them fir cones. As a matter of fact, though, they are actually spruce cones. What do you mean, actually? Well, fir cones come to pieces when they fall off the trees. Spruce cones stay intact. Some things. You have to see them. You're from around these parts? No, just visiting. Getting accustomed to it, I guess. Me neither. I come here for the beautiful view. Smoke? No thanks. I quit. अच्छा. The climate makes me feel a lot better. That's for sure. ओके तो जैसे जैसे हम इस पे क्लिक करें, ये पर्टिकुलर जो ये लेडी है, तो अलग अलग बातें हो रही है, अलग अलग कन्वर्सेशन हो रही है. रिपीट नहीं हो रहा फ़िलहाल, तो एक और बार हम लोग देखते हैं. So what are you doing अच्छा, up here, all on your वापस own? नई बात. Fed up with all the hurly-burly down there? I just like traveling. Always on the road, hiking and all that. So you're taking a break, or do you know the locals? I saw you down there at the raffle. So you're taking a break? Oh, I lost my hiking boots. Okay. They just slipped over the railing. And now they're gone. If you ask me, we are really all in the same vast backyard. All this madness. Looking for some kind of meaning. Anything at all. What about the locals? Do you know them? Most of them. I'm actually visiting this place every year. Why? You know a man called Lazarus Tuft? Yes, I do. Fascinating man. He absolutely crushed me at Doppelkopf once. No one knows for sure where he came from and what he's doing here. Legend says he bought the old mansion in the woods off of his Doppelkopf millions. He rarely ever visits town. Hardly surprising the way folks keep talking around here. Anyway, let them talk. That's my position. अच्छा तो बहुत लोग हैं जो लज़ारस टफ्ट को जानते हैं, वो बंदे को. ठीक है. I saw you down there at the raffle. Yes, I tried my luck. Did you win? Just a snuff box. Such a letdown. I've sworn off the devil's dealings. You? I've won a can of cat food. About the raffle. Did you win? Just a snuff. I've sworn off. You? I've won a Sounds a bit like you're going through a life crisis. Oh no. Quite the opposite is true. I gained insight. That's what I did. Insight. Exactly. That's it. ठीक है, तो हमने बहुत सारी बातें कर ली एंड अब तो ऑप्शंस भी नए नहीं आ रहे, न्यू ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है, तो अभी वक्त है गुड बाय का. I've got to go. Okay. Have a nice evening. इससे हम कैट फूड
No luck in the raffle either. कैट फूड दे दे क्या इसको? I guess you could say so. Sorry, I have no use for this. नीचे चल के वापस हम लोग जो है इधर चलते हैं अपने रूम की तरफ। पहले तो इससे हमें इसको फिशिंग रॉड देनी है। I wanted to return your fishing Yep. rod. Good. Did you get a bite? Kind of. There is a lot going on in this lake. I can tell you, Professor. Just the other day, I caught a red herring this big. So, let me take a look for your pawned item. Ah, there you are. Here's your whistle. Whistle? Whistle? Well, yes, your whistle. This is not my whistle. Not your whistle? Of course this is your whistle. Your whistle. I'm sure I'd recognize this whistle if it were my whistle. I left you something completely different. Right. कुछ और था वो। What was it then? मसाज रॉड था ना? अबे My massage rod. Your what? I don't have no massage rod in here. As I said, here is your whistle, Mr. Tannhauser. Thanks. वैसे तो हमने विसल नहीं छोड़ी थी डिपॉजिट के तौर पे, कुछ और था यार। ठीक है यार, अभी विसल से ही काम चलाते हैं। पता नहीं क्या करना है विसल के साथ। They're having a blast out there. ठीक है, काफ़ी सारे नाम हैं इसमें एंड पता नहीं लेकिन मतलब क्या है इसका। ऑब्वियसली ये जर्मन में ही लिखा है। ओके, ये पूरा डिज़ाइन है इस पर्टिकुलर मशीन का, या जो भी बोलो, जो हमें बनाना है। What's that gooey stuff? Is that your blood? My body is disintegrating. What do you mean? It is the effect one has to bear when staying in another dimension. Okay, for okay, too okay. long. Does it hurt? Yes. ओह, मतलब ये जो बंदा है ये डिफरेंट डायमेंशन में है, तो इसलिए उसकी जो बॉडी है वो डिसइंटीग्रेट हो रही है। तो इसलिए हमें वो ना होने से उसे बचाना है, और होने से हमें उसे वो बचाना है। इससे पहले ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो जाए, उससे पहले हमें वो फिक्स करके वो 4 चीज़ें कलेक्ट करके हमें इसे भेजना है। Baron? Mr. Tannhauser. The pleasure is... I saw you at the raffle, right? Did you win anything? I won a pair of hiking Oh. boots. Take a look at me. How am I supposed to wander anywhere? You, on the other hand, Mr. Tannhauser, you look like the type to be struck by wanderlust once in a while. What about you? Did you have any luck with your ticket? I won this. Excuse me, is that cat food by any chance? जी हाँ सर, I am asking on behalf of Klaus. जी हाँ, He loves cat आपके food. क्लाउस के लिए है ये। Would you mind making a ज़रूर trade? ज़रूर। What do you have in mind? You leave this delicious can of cat food to Claus and me, and in return, I give you this new pair of hiking boots, size 13. What do you बढ़िया है। Yes, of course. Sounds like a perfect deal. think? It will be to your benefit. ओके तो गाइज, अभी जैसे वो जो रैफल की बात करें, मतलब जो स्टॉल था जहाँ पे एक सीन में जहाँ पे बहुत लोग खड़े थे उस पर्टिकुलर स्टॉल में, रैफल में, तो बहुत लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें जीती उस पर्टिकुलर स्टॉल से। तो हमें जो जो लोग उधर खड़े थे उन सब के साथ जाके बात करनी है एंड उससे ये जानना है कि आप लोग क्या जीते। तो ये बंदा हाइकिंग बूट जीता था, तो हमने वो ले लिया, ट्रेड कर लिया हमने।
एंड अभी ये हाइकिंग बूट हमें देना है वो पर्टिकुलर लड़की को जो उधर ऊपर हिल पे खड़ी होके जो व्यू का मज़ा ले रही है। उससे बताया था कि मेरे हाइकिंग बूट्स खो चुके हैं, तो अभी हमें उसके पास जाना है एंड हमें जो है वो उसे लौटाना है। तो अभी देखते हैं वो रिटर्न में हमें क्या मिलता है। ये रही वो लड़की, तो इसे हम देंगे उसके हाइकिंग बूट्स एंड लेट्स सी। About the raffle, did you win? Just a snuff box. स्नफ बॉक्स, Such a ठीक है। I've sworn off you. Didn't you say you lost yours? Yes, indeed. I'd exchange anything from my inventory for a new pair of hiking boots. Would you trade with me by chance? Your hiking boots in exchange for my snuff Okay. tobacco. Fair enough. Oh, thank you. तो हमें एक Now, स्नफ टोबैको मिला and है। they're a perfect fit too. I've got to go. Okay, thanks again. You're welcome. Finally, I Farewell. ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। अभी हमें कहाँ जाना है? Arr. About the raffle. Would you like to make a deal? Would you like to have the voucher in exchange? You know, the one for the boat trip on that lovely lake. That's what I got at the raffle tonight. That's from the local boat. Yes. Do you want it? Yes, of course. Okay, let's make it so. All right. Deal. ओके गाइस, तो बहुत ही बढ़िया हुआ, अभी बहुत ही अच्छी डील हुई है। मतलब हमें कोई तो टिकट मिली है, या तो बोल सकते हैं ऐसा कोई तो एक्सेस मिला है ये पर्टिकुलर क्या बोलते हैं इसको, राफ्ट में जाने का। एंड वैसे है क्या ये चीज़? A swimming animal in the shape of the flying dinosaur. इससे बात करते हैं एक बार, इससे दिखाते हैं अपनी टिकट वाउचर। I won this voucher in the raffle. I know. How can you know? Yeah, my sister told me. She's hosting the raffle booth tonight. Who would have thought? कहाँ पे इसको लेंगे। ये जो भी इधर पड़ा है ये चीज़, ये ले लिया हमने। एंड ये ले तो लिया है, लेकिन हम करेंगे क्या इसका? ठीक है। ओह भाई साहब, ये काफ़ी डिफरेंट जगह है। पहली बार मैं इस जगह पे आया हूँ, क्योंकि इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग इस तरफ हमारे पास एक्सेस नहीं था। तो अभी देखते हैं, मतलब बहुत सारे ट्रैश पड़े इधर, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स पड़े। बहुत ही अमेजिंग व्यू है यार, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है। ओके, तो गाइस ये क्या है? Keep out. Packets and groceries delivery. Whistle 2 times, leave delivery on doormat, and exit the Deliveries. area. No advertisements. विसल तो है हमारे पास, रिकॉर्ड करते क्या है एग्जैक्टली। Beverly, my image of this innocent place has been tainted. I found a trash dump right in the middle of these woods, probably long established by the locals. The question arises, who would sink so low? ओके, इधर कुछ तो बड़ा है, पिक कर सकते हैं। यप, विसल करके देखते एक बार, 2 बार, 1 बार क्या? अबे ये तो क्रोज है, ये क्या कर रहे हैं इधर? ये क्या है अभी? ये रस्सी कहाँ से आई अब? ओके, ऊपर चढ़ रहे हैं हम लोग। अभी ऊपर क्या है? क्या है ऊपर? ओके, ठीक है, तो अभी शायद से हमें The perfect spot for a bench. एक्चुअली बहुत सही जगह है ये जो बेंच रखी है ट्री के ऊपर, इधर बैठ के भाई
है ना, मस्त एक चाय मिल जाए एंड हम दे बैठ के मस्त व्यू का मज़ा ले, बहुत सही लगेगा। ठीक है, अभी चलते ऊपर। एंड इधर कोई तो है, अबे क्या बनाया है, ट्री हाउस बनाया है इसने। कौन है ये बंदा? बहुत ही सही घर बनाया जो भी है ट्री के ऊपर। Gotcha! This is private property, and you're obviously on my Okay. turf. This time, boy, you've chosen the wrong neighborhood. सॉरी, मतलब I didn't mean to disturb. I see no reason for violence. I'm selling massage rods. Easy. क्या बोले उसको, मसाज रॉड्स बोलूं क्या? I'm selling these fine massage rods. Didn't you read the sign? Signs? Which signs? Very funny. You're one of them. I know. Confess. One of them? Oh no, not again. Okay, I'll tell you once and for all, I'm not an alien. I don't care what you believe. A what? An alien? Ha! Now you think you've been clever, don't you? No, sir. And just in case you want me to take part in any tests, let me tell you. You government guys are getting more and more annoying. Wait, government guys? I already told you guys last time. Not on my watch. Name and rank soldier. You're with the CIA, BND, HVA, FBI, NSA. Spit it out! Name's Tannhauser. I'm a quantum physicist on vacation. Liar! That's ridiculous! You better tell me the truth, or else... Say something! क्या बोले उसको मैं? Oh. What's with all that garbage? Okay, I guess you're right. The quality of your lies doesn't imply a higher intelligence at work. Quite the opposite, in fact. So, what are you doing here anyway? The truth this time, the whole story! Well, it all began a few weeks ago, when I got this notification that said I won a trip to Europe. I was stunned, but Aunt Lottie gave her blessings. A prize like this should not be forfeited, she said. I might even be able to discover some distant relatives. Also that I deserved a break. She only wished for me to return safe and sound. So after a brief visit to Berlin, I began my journey. Okay. And that's how I ended up here. Interesting story. I mean, it's ridiculous, but I'm inclined to believe you. Now, about the part with the Millennium Cooperative, I always had the impression that something wasn't quite right with them. Well then, bye. Feel free to visit me anytime. We can go into all the details. Name's Lessing, by the way. ओके तो इसको हमने काफ़ी सारी चीज़ें बताई अपने बारे में कि हम लोग कौन है, कहाँ से आए। फाइनली इसको भरोसा आ गया। लेकिन अभी इधर आए हैं तो कुछ तो हम लेके जाएंगे, मतलब कुछ तो हमें मिलना चाहिए, इतनी दूर आए तो लेट्स सी क्या हमें मिलता है, कोई पार्ट्स वगैरह मिले। अरे क्या बात है, इसका हमने ये ले लिया। इसका जो पावर सप्लाई जिससे हो रहा था वो विंड मिल से, तो वो हमने ले लिया। इसकी लाइट पूरी चली गई। ये तो कुछ बोल भी नहीं रहा। ठीक है, अब और क्या ले सकते हैं हम, ये देखते हैं क्या है ये। No way. Brass is my kryptonite. And contact allergies are nothing to joke about. चलते हैं नीचे। ठीक है, तो अभी ठीक है, अभी चलते हैं वापस विलेज की तरफ। एंड लेट्स सी गाइस अभी क्या होता है। इधर भी एक बार विसल करते हैं ट्री के पास, क्या होता है।
ओके इधर भी आ चुके हैं लोग. ओके Over here, little birdies. खाओ खाओ आराम से खाओ सब लोग. Whoops. I must have overfed them. It doesn't look... There's a leak in the paddle wheel. ओके तो गाइस ये जो बोट है इधर ये इसका एक जो व्हील है पैडल व्हील वो मिसिंग है, इसलिए ये थोड़ा सा हाफ ये पानी के अंदर जा चुका है आधा लेफ्ट साइड से. तो आई थिंक इसका भी जो भी ऑब्जेक्ट मिसिंग है वो हमें ढूंढना है. आई एम नॉट श्योर इसका कुछ यूज़ है कि नहीं ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है. ये तो पता नहीं पहले से ही लॉक्ड है ये जहाँ पे अभी मैम जा रहे हैं. ये तो लॉक्ड ही है. ठीक है अब चलते आगे विलेज की तरफ. लेट्स सी कुछ हमें कुछ नया मिले. Hey, get lost, you wet blankets. ओके ठीक है गाइस. तो बेसिकली जो जहाँ पे जिस जगह पे हमने विसल किया वहाँ पे जो है वो कोई तो कनेक्शन था जो जुड़ा हुआ था इस टीवी के साथ किया. तो ये पूरा ख़राब हो चुका है, जो केबल है पूरा ख़राब हो चुका है इस पर्टिकुलर टीवी कनेक्शन का. एंड अभी फाइनली वो लड़की चली गई है क्योंकि ये जो टीवी है वो ख़राब हो चुका है. एंड अब इस टीवी के अंदर जो पार्ट है जो हमें चाहिए था वो हम निकालेंगे. तो अभी चलते हैं. brown tube. I could use it for the quantum discriminator. I can't open it without the right tool. तो हम अभी ओपन भी नहीं कर सकते ऐसे क्योंकि इसे खोलने के लिए हमें कोई तो टूल चाहिए. Lainey's left her favorite spot after all. ओके ठीक है कुछ तो हमें चाहिए. The perfect spot for... These fruits are mine to pick up. ओके ये एक एप्पल लिया हमने एंड पता नहीं इसका क्या यूज़ है आगे जाके. Detailed blueprints for a bunker layout. Oh. I'd rather not sniff around. Self-defense. A shopping list. Rations, canned meals, tinfoil, magazines. No way. Brass is my kryptonite. It's a bass tuba. The landscape vaguely reminds me of home. This light bulb is wind-powered, 100% clean energy. What's with your squirrel? That's Drowsy. He's me friend. Special Agent Hans Tannhauser. I'm with the FBI. Very Ever heard the term Saturn portal? Of course. In theory, the Saturn portal describes a kind of interdimensional opening. A gate to the stars, like a crossroads or a junction in space-time. That sounds familiar. So why are you living out here on your own? So they declared me insane and put me in the sanitarium. Back in the days when it used to be a real sanitarium. Before the cooperative took over. When things went down the drain, I realized that people like me have no place in a society like this. People like me have to disappear. Go undercover. We have to resist until our day comes.
what do you know I know they're a bunch of powerful people. A secret society, like the Freemasons or the Illuminati. They are directing from the shadows, globally, playing governments like puppets on strings. They surely built something fishy up there in the mountains. I always knew it. Crikey, you must have been down the deepest depths of the rabbit hole. Of course I have. If you look at the ancient Sumerian and Babylonian writings, you will see a pattern emerge that... Ah! You hear that hum? Stop it! Make it stop! Stop, stop, stop! It's them! They try to slowly drive me insane with their atomic radiation. That sure sounds a lot like science fiction to me. Well, it's all arcane theoretical physics, blending modern science with occult magic. They are trying to establish a connection to the southern pole of Saturn using Birkeland currents. Birkeland currents, ever heard of that? They flow through the Earth's magnetosphere out into the cosmos in form of an electric plasma stream, a twisted helix, a conduit right up to Saturn, to free the entities trapped in there. If you look at the northern pole of Saturn, you will recognize that shape, the hexagon. I think I've heard enough. Feel free to visit me anytime. We can go into all the... ये तो बहुत सारी बातें हमें पता चली इस बंदे के साथ बात करके about the Millennium Group and also about the Saturn portal इससे बताया तो काफ़ी सारी चीज़ें ये जानता है काफ़ी एक्सपीरियंसेस इसने किए Hey, sweetheart. Good evening. About the paddle boat over there, it doesn't seem particularly seaworthy. Why? What's wrong with it? I think it has a leak. The paddle wheel isn't in good condition either, if you ask me. Oh my. You see, I'm afraid it's the last of its kind. Its friends are already lined up at the dry dock. Do you think you could help me fix it? I can't really leave my post right now. Yes, of course. I'll have a look at it. अभी हम ये कहाँ से ढूंढेंगे ठीक है चलते हैं आगे एंड कुछ तो हमें ये चीज़ें मिली अलग अलग It's much too cold to go for a swim right now. Okay. This should suffice for a paddle wheel. This should fix the leak. फाइनली गाइस ये जो छोटा सा बोट टाइप है ये हमने फिक्स कर दिया है एंड अभी हम इसे लेके चल सकते हैं यस यप पता नहीं हम किस तरफ गए किस ओ भाई साहब The woods surrounding Truberbrook emanate a dreary sense of blandness. I've rarely ever been engulfed in a more terrifying, dreadful environment. Not to mention there is a green glow spreading through the fenwoods. Interesting. Okay guys, काफ़ी different location है, new location है, बोल सकते हैं swamp करके areas होते हैं swamp type जो काफ़ी muddy sticky muddy होती है वैसा टाइप का एरिया है बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस इधर Good idea, Hans, but that doesn't work at all. यप बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है मैं किसी की तो पैर है He won't be needing these anymore. They did their job. Or did they? Okay, हमने ये boots लिए Good idea, Hans, but that doesn't work at all. Okay, इधर क्या होगा कोई तो skeleton है किसी का तो animal का शायद No trespassing. Since signed, the Paleontological Society of Truberbrook. कि ये ग्रीन क्या है अभी इधर
I can't reach them from here. ओके चलते हैं आगे इधर कुछ तो है लाइट Oh, I'm not feeling too well. Something's glowing green. I can't reach them from here. Mushrooms. Look. ये हो क्या गया मतलब ये ग्रीन लाइट कैसे हमारे ऊपर ये मतलब पूरी हम हाईलाइट हो चुके हैं ग्रीन लाइट के साथ नॉट श्योर क्या हुआ है Excuse me, sir. Let's see if he had anything on him. Only if it helps to clear his identity, of course. An old rusty key. Okay. Poor sod. Stuck in the mud. Literally. Good idea, Hans, but that doesn't work at all. ठीक है अभी चलते हैं वापस अपने बोट में Ahoy. वापस हम आ चुके हैं अपनी जगह पे लेकिन हम पता नहीं काफ़ी ग्रीन ग्रीन हो चुके हैं हमारी जो बॉडी है काफ़ी डिफरेंट हो चुका है You fixed the boat! How can I ever thank you? Don't worry about it. No, I insist. Please take this as a symbol of my appreciation. This postcard will help me find my way around. Okay. Come and visit Truberbrook for perfect summer vacation. Thanks. एक मिनट काफ़ी डिफरेंट जगह है इसमें ये पोस्ट कार्ड में अबे ये इधर कहाँ से आई Look who we've got here. I see you're making good use of those boots. These boots are made for walking. Thanks again. My pleasure. You're looking a bit pale, if I may say so. Here, have one of these. They always work for me. Vitamin pills? Wow. See, claro. They get the juices flowing and make you look gorgeous. All based on herbal essences. Thanks. I have to be going. See you later. इससे कुछ तो वाइटामिन्स दिए हमने एंड मुझे कुछ आइडिया आ रहा है कि हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अरे अब इधर कहाँ से पहुँच गए ओह भाई साहब I'm not so sure about that. ओके तो गाइस अभी हम लोग ये था चैप्टर 2 था गाइस ये वाला पार्ट ये लोकेशन एंड हम इधर कैसे पहुंच चुके हैं जो भी है बहुत अमेजिंग है No way I'm ever going back in there again. ओके काफ़ी सारी चीज़ों का हमें एक्सेस मिल चुका है लेट्स सी गाइस चलते हैं इसके अंदर I'm not in the mood for a snack right now. ओके तो गाइस इधर तो वैसे कुछ है नहीं ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए क्योंकि
No ठीक way है I'm ever. तो नहीं इधर भी हम नहीं जा पा रहे वैसे तो। I'm not so Yep. sure about that. तो अभी गाइस कुछ बचा नहीं है तो इधर से तो बाहर ही निकलते हैं फिलहाल, वापस अपने उस जगह पे चलते। कहाँ पे चले इधर से अब? ये वही लोकेशन है आई गेस जहाँ से हम आए थे। एंड ये कौन सी जगह है? ओके ये वाली है। इधर से इधर चले तो ये टाउन आ जाएगा आई फील। यप परफेक्ट। ओके तो गाइस हमारे पास एक विटामिन की गोली है, यू नो जो वो जो लड़की थी उसने हमें दी थी ये गोली। एंड इसने भी बोला था कि अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए, अगर आपको ज़्यादा पॉइंट अर्न करना है इसमें, देन आपको विटामिन चाहिए थोड़े से। तो हम ये विटामिन पहले इनटेक कर लेंगे, उसके बाद जो है हम वो हैमर जोर से मारेंगे ताकि हमें प्राइज़ मिल सके। सो हियर वी गो। Step right up! Step right up! Mister, want to test your Yep, strength yep. again? Why not? और ये मारा जोर से, बहुत ही बढ़िया। अरे 5 में से 5। Wow, not too bad. Not too bad at all. I think we have a new champion. Congratulations. Here, this is your prize. A leaden trophy. Like a trophy Yep. made out of lead. This one's a real beauty. Thanks. ओके तो हमें ट्रॉफी मिल चुकी है मेड आउट ऑफ लेड। तो इसका क्या यूज़ होगा पता नहीं, देखते। ठीक है गाइस अभी क्या कर सकते हैं हम लोग? इसके अंदर चलता। यप एक चाबी मिली थी हमें रस्टी की। ओके तो फाइनली ये दरवाज़ा खुल चुका है, जो मैं कब से बोल रहा था कि इस दरवाजे के अंदर क्या है, तो अब हमें पता चलेगा। तो अभी चलते हैं इसके अंदर एंड लेट्स सी क्या है इसके अंदर। काफ़ी अंधेरा है। Beverly, I have unearthed the gate to a sealed crypt, the cellar Cellar. of this lodge. My descent begins. This is what Professor Lidenbrock must have felt when he climbed down the Snæfellsjökull. I can hardly Yep, see a me too. thing. कुछ दिख ही नहीं रहा है, ज़रा सा भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ हम खुद दिख रहे। एंड कोई मतलब नहीं है, हमें शायद से कोई लाइट चाहिए इसके लिए, जुगाड़ करना पड़ेगा लाइट का, वरना तो कुछ हो नहीं पाएगा। इससे पूछते यार। Truda, Hello. I would like to ask you something. Oh, yes, of course. What can you tell me about your brother? He's a drunkard. He's also not the most reliable type of person, if that counts as a feat. As you see, he's just left me here alone with all this work that needs to be done. Can you give me a description? Should you run into him? Is that why you are asking? Tall grown, beardy type, red nose, always wearing those yellow rubber boots. Why do you want to know? येलो रबर बूट्स, वो हमने स्वैम्प एरिया में देखा था। स्वैम्प एरिया मतलब जो मड़ी वाला एरिया था, उधर हमने एक बंदे को देखा था जो मतलब पानी के अंदर था, आधा वो पानी के अंदर था, उसके पैर बाहर थे, बाहर दोनों पैर बाहर थे। एंड उसमें से हमने वो जूते निकाले थे येलो कलर के, तो वो शायद से उसी का भाई था, इसका भाई। आई थिंक आई मे हैव मेट हिम। यप I think I may have met him. I found his mortal Oh, remains out shit. there in the mire. I'm sorry. Are you sure? I can. वही था। Oh, Heinz. Poor old Heinz. Rest in peace. Can't say I'm really surprised. Thank you very much. I will inform the inspector immediately. At least he didn't take the long trip for nothing then.
I would like to ask you something. Oh yes, of course. I'll be leaving the... Make yourself at home, Mr. तो गाइस हमें जो है कुछ चाहिए, कुछ तो चाहिए. क्या चाहिए? एक लाइट चाहिए वो सेलर के अंदर जाने के लिए, जो हमें मिल नहीं रही अभी. The streetlight is flickering unsteadily. Typical case of light pollution. ओके. ठीक है गाइस, तो कुछ तो हमें कुछ नया मिला है इसमें. ओके, ये क्या किया हमने? The streetlight is flickering. ओके गाइस, तो शायद से हमें लाइट का जो सोर्स है वो मिल चुका है थोड़ा बहुत, जहाँ पे हमें थोड़ी रोशनी मिल सकती है, ब्राइटनेस मिल सकती है कोई डार्क एरिया में. तो अभी हम चलते हैं इधर सेलर की तरफ चलते हैं जहाँ से हम लोग आए थे. I can hardly see a thing. Light the way, my friends. ओके गाइस, सो फाइनली जो है लाइट हमें मिल चुकी है. एंड काफ़ी अलग ही टाइप का सेलर है, काफ़ी अंडरग्राउंड है ये. तो चलते हैं. काफ़ी अनस्टेबल सीढ़ियाँ हैं ऐसा लग रहा है. अबे इधर इधर इधर. ओके, लेट्स सी कितना नीचे है. सही से चल क्यों नहीं रहा यार ये. ओके, फाइनली नीचे पहुंच चुके गाइस हम लोग. Truberbrook's finest dry yeast. ओके, ईस्ट मिला हमें. ये क्या है? ओके, ठीक है. It's a recipe for Bolzenschuss schnapps. Top secret. Let's see. Fruit, add malt, add yeast, season with a pinch of slumber morale. Dead simple. ओके. ठीक है गाइस, तो अभी आगे देखते हैं और क्या मिलता है हमें. मॉल्ट मिल गया है, ईस्ट मिल गया है. अभी और क्या मिल सकता है हमें? Fire making first. I need to find a way to ignite the gas. ओके. ठीक है, वापस चलते बाहर. एंड लेट्स सी गाइस, इससे बात करते हैं. Truda? Hello, I would... Oh yes, of course. Got a light? Sure thing. Here you go. Never mind. I'll be leaving. Make yourself... बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया. फाइनली एक हमें लाइटर मिल चुका है. एंड उस लाइटर की मदद से जो है हमें वो पर्टिकुलर I can hardly see a thing. चीज़ को हम इग्नाइट करेंगे. Light the way, my friends. ठीक है, इधर चलते हैं. इसको इग्नाइट करना पड़ेगा हमें. Fire making first. Fire making... ओके, एक मिनट. हाँ, ठीक है. तो हमने लाइट कर दिया है. ये अभी गर्म हो रहा The है. recipe mentions fruit इसमें to be हमें fermented. यप फ्रूट चाहिए हमें पहले. तो एक एप्पल डाल दिया है. उसके बाद एक This looks promising. मॉल्ट एंड एक ईस्ट. Only one more ingredient. If only I had slumber morels like they mentioned in the recipe.
ये क्या है मतलब slumber morals? This looks promising. If only I had slumber morale. क्या वो मशरूम तो नहीं है ना ये? Not sure bro, not sure. It's a recipe for Bolton Schuss Schnapps, top secret fruit and eat, seasoned with a pinch of it. ओके गाइस, तो और एक चीज़ मिसिंग है, वापस हमें जाना पड़ेगा बाहर वो ढूंढने के लिए। ऐसा मुझे लग रहा है शायद से वो जो मशरूम एक जगह पे पड़ा था वो हमें जो है एक बार उधर जाना पड़ेगा, विज़िट करना पड़ेगा वो मशरूम के पास, स्वैम्प एरिया में। तो एक बार उधर चलते हैं, लेट्स सी। बता रहा था कि इधर जो है सामने कहीं पे तो मशरूम्स है जो हम ओके फाइनली हम लोग जो है पानी में चल सकेंगे अब, जो पहले हम नहीं कर पा रहे थे। ओके ठीक है, यप बहुत ही बढ़िया। ये मशरूम्स जो है वो ले लेते पहले तो, ले लिया हमने ना कि नहीं? यप ले लिया है फाइनली। ओके गाइस, अभी चलते सीधा वापस सेलर में। I can hardly see a thing. Light the way, my friends. तो अभी हम डालेंगे मशरूम को एंड जो रेसिपी है वो रेडी हो जाएगी। Yikes! ये क्या हुआ? हुआ क्या है? I'm going to take a sample. For science. अच्छा, the soul travels but eventually enters the flesh again. हुआ क्या है लेकिन? हम इधर कैसे आ पहुंचे? शायद से हमने वो जो रेसिपी थी, फाइनल जो रेसिपी हमने बनाई वो हमने शायद से सैम्पल के तौर में थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था, आई एम नॉट श्योर। इसीलिए टेस्ट या तो पता नहीं क्या किया, इसलिए शायद हम Alcohol? कुछ हुआ था। Never again. Wasn't I Alcohol. carrying some cool gadgets in my pockets earlier? ये सारे गैजेट्स तो है, जो भी है मतलब इन्वेंटरी में चीज़ें तो है। Wow. ये क्या हुआ? अचानक से स्नो इधर कहाँ से आ गया इतना सारा? God bless, what's this? Did you ever see the likes of it? What's going on? क्या? Where are you heading? No time to lose. Don't you see the cold front? I have to go to the weather station. There's a weather station here? Well, yes. Don't be silly. Okay. What was that? पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत ही अजीब हो रहा है। ओके, वापस आ गए हम लोग, नॉर्मल वापस हो गए एंड पता नहीं क्या चल रहा था वो। एक मिनट वेदर स्टेशन। ओके गाइस, एक और नया मार्क आ चुका है इधर ऊपर की तरफ। लेट्स सी क्या है उधर। There is no bad Okay. weather, only the wrong clothes. I wholeheartedly have to agree with this saying, Beverly. I am standing on top of the Klumpen, apparently the highest elevation within the surrounding low mountain range. If you wanted to, you could describe the clothes that I'm wearing as perfectly unfit for the current weather conditions. After a short walk, I have reached the local weather station. ओके, तो वेदर स्टेशन हम लोग पहुंच चुके हैं। जो वो पर्टिकुलर छोटी सी लड़की है, पता नहीं कौन है वो, जो बोल रही थी। एंड
ये ले सकते हैं हम? काफ़ी जैम हो चुका होगा ये, नहीं ले पा रहे। फ्रोजन ऑब्वियसली। थोड़ा सा विटामिन ले लेते एंड उसके बाद शायद से हम ले पाए। अरे अलग ही बैकग्राउंड वो साउंड था। ओके इधर क्या है? In Truberbrook, up on the Klumpen top, the art of meteorology is in full swing. The current microclimatic developments in this area seem to have sparked scientific interest. I've already made an entry on this. ओके 104433 पता नहीं क्या है वो। ठीक है अब चलते हैं इसके पास। ठीक है क्या है? It's merely a conventional weather balloon, not a flying saucer. इससे chat करते हैं थोड़ा सा। Good morning. I didn't see you at all. Please excuse the frosty welcome. Madonna Luke, I'm with the Meteorological Society. Tannhauser, my pleasure. So what are you doing here? I'm observing the weather. So anything interesting about the weather? Well, actually I'm in Truberbrook because the weather here is so inconspicuous. Quite your statistical average weather. But this afternoon I was thunderstruck. The ordinariness has disappeared. And now the ice is cracking under your feet? Exactly. And I'm in a haze how that's even possible. It's dawning on me what you're trying to say. I see. You're slowly falling, huh? So what's the weather up to these days? Just look. The weather's gone completely mad. I just can't make any sense of it. How did that go again? When thunder in September rumbles? Winter comes, the north wall crumbles? Oh, come on, that's ridiculous. Okay, what about, September winds, believe me now? September winds, believe me now? Or best relief, taking a bow. No, come. For how long have you been out here? In Truberbrook, you mean? The project is running for 6 months now. So what? So any? What? But this... And now the ice is cracking. It's dawn. I'll be leaving then. Of course. The tower hosts an impressive array of measuring devices. I prefer to remain on solid ground in this kind of weather. Pardon me, is that helium in your tank by any chance? Exactly. To fill the weather balloons. Okay. Hey, please don't steal my helium. हमें हीलियम कहीं ना कहीं चाहिए। Hey. बट कैसे ले? अबे कैसे ले सकते हैं अब इससे? Hello? Good. I don't want to rain on your parade, but could I sponge some helium off of you? Well, helium is extremely valuable, especially up here. What exactly are you up to? I want to use it as a coolant. As a coolant? That would not work at all. You would need to lower its temperature until it becomes liquid. I think it'll work out all right. Believe me, I know what I'm talking about. After all, I am a physicist. So, could you spare some of your gaseous helium? I can provide you with some of my helium if you do me a favor in return. Would you mind venturing down to the village and send a telegram to the headquarters? I can't leave here right now, by no means. No one is going to believe me, ever. I'm sitting here, year after year, nothing happens. And then,
Suddenly, there's a flash. Aurora Borealis in Truberbrook. In the name of academic merits, I have to help you. Oh, thank you so much. The guest house down in the village has a telegraph. Okay. A message. ये जो मैसेज है ये कुछ तो ओके तो गाइस ये जो मैसेज है ये हमें जो है बहुत ध्यान से कहीं पे लिख के रख देना एंड अच्छे से जो है याद करके रख देना क्योंकि इतना बड़ा ये मैसेज है तो ऑब्वियसली कहीं आगे काम आएगा ही तो गेस्ट हाउस में जाके शायद से हमें बताना पड़े कि तो अभी चलते गेस्ट हाउस की तरफ एंड मैंने ये जो मैसेज है मेरे हाथ पे लिख दिया है पेन के साथ तो काफ़ी लंबा है काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स है तो इसे याद रखते हैं एंड अभी चलते हैं Truda? Hello. I'd like to... Oh yes, shoot. Well... Zero. One. Two. One. Zero. Zero. Oh. Let me read it to you. Data inconclusive. Stop. Please verify all data. Stop. Sensational. Stop. Thank you, Truda. I will deliver the message at once. ओके गाइस सो फाइनली हमने कर लिया है काफ़ी सारा ट्राई देने के बाद मतलब फाइनली जो कोड है वो हो गया अभी चलते हैं वापस एंड इससे बात करते हैं Hello? Here's the answer from the headquarters. Data inconclusive. Stop. Please verify all the data. Stop. Sensation? Stop. A sensation? Did you hear that? That is quite a sensation. Just one more thing, and you can have as much helium as you want. Here. Grab the screwdriver, check on my stations, there are 3 of them, and get me the measurings. Please, I can't leave, by no means. Where are these stations of yours? Well, there's one by the lake, another one in the village, near the lookout, and the 3rd is far out in the swamps. All right. Okay. Thanks a bunch, Mr. Tannhauser. Mr. ओके तो ये जो रीडिंग्स की बात कर रही है तो वो हमें कहाँ से निकालना है वो जो पोस्ट छोटा सा मेल बॉक्स टाइप जो भी क्या बोलते हैं छोटे सा वाइट कलर के वो एक कवर्ड अप कोई तो ऐसे बॉक्स टाइप थे वो हमें खोलने हैं एंड स्क्रू ड्राइवर से एंड उसमें से हमें वो जो भी मेजरिंग्स है वो मिलेंगे पहले तो हीलियम ले लेते हैं इसमें से Hey, please don't steal my अरे अच्छा पहले हमें वो रीडिंग्स देने पड़ेंगे उसके बाद ही हम ले सकते हैं ऑब्वियसली हीलियम तो पहले हम चलते हैं कहाँ पे स्वॉम्प में चलते हैं आई होप इसमें कोई ऑर्डर का कोई सीक्वेंस नहीं चाहिए इसमें कलेक्शन के लिए सीधा हम लोग ले लेते हैं I bet she doesn't come out here on a regular basis. Let's see. Wind direction, wind speed, precipitation. Temperature? Air pressure? 2 more weather stations to check on. ठीक है चलते हैं आगे अभी कहाँ पे अभी इधर ठीक है अभी इधर चलते हैं आगे की तरफ इधर एक बॉक्स है इधर ये रहा ये भी खोलते हैं लेट्स सी
Wind direction, wind speed, temperature. Hygrometers aren't supposed to be so close to open water. Only one weather station left to... ओके ये है हिल के ऊपर. सॉरी मैं गलत जगह पे तो नहीं चला गया. यप गलत जगह पे चला गया था. ओके अभी हमें इधर चलना है हिल के ऊपर. फाइनली ये खोलते हैं. Let's see. Wind direction, wind speed. It's pretty windy up here. Temperature. Got it. That's all I need. ओके सारे रीडिंग्स जो भी थे वो हमने ले लिए हैं तीनों बॉक्सेस में से. अभी चलते हैं सीधा उसके पास. Hello? Good morning. I think I've got your measurings. Oh, that's incredible. Can you smell the Nobel Prize? I've got to take a closer look. But ये कहाँ जा रही है? Yes! Keep the helium! Take as much as you want! ओके तो अभी हीलियम जो है पूरा हमारा है. जितना चाहे हम ले सकते हैं. ठीक है. that's filled with gas. फाइनली हमने ये ले लिया है. एंड I prefer... ओके ओके ठीक है गाइस अभी चलते हैं बाहर. कहाँ चलेंगे? इधर. ठीक है. आई होप अब हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली है. तो अभी चलते हैं अपने रूम की तरफ एंड देखते हैं शायद हम वो चालू कर सके जो भी पोर्टल टाइप था. ओके गाइस सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे रूम में. एंड अभी जो है हम लोग चलते हैं I इधर. don't even know where to begin. ओके एक मिनट गाइस. इसको पहले तो हम हीलियम जो है यूज़ करेंगे. इसमें लगा दिया है. Great idea. That's it. That's a good start, isn't it? 3 pieces left. 3 pieces. Gretchen has an idea. There's no time to lose. तो ग्रेचन वही लड़की है जिसने हम लोग को धोखा दिया था. तो लेट्स सी वो कहाँ पे है, क्या कर रही है. ये रही ग्रेचन. ये पोर्टल को ऑन कर रही है. ओके एंड हमारे पास ऑलरेडी एक स्क्रू ड्राइवर है तो इससे हम खोल सकते हैं इस टीवी को. ओके फाइनली हमने ये ले लिया है. Perfect. Another component for the quantum discriminator. यप एक एनर्जी सोर्स हमने ले लिया है, कलेक्ट कर लिया है. एंड अभी हम चलते हैं वापस हमारे फ्रेम की तरफ. ये लगाते हैं. Thanks. Perfect. परफेक्ट. We're halfway through. Only 2 pieces and counting. Gretchen is making progress. Danger is imminent. Core temperature at 15 million degrees Fahrenheit. Check. ओके ओके तो गाइज हमें और भी कुछ चीज़ें चाहिए लेकिन कहाँ से. ओके तो गिटार वाले के पास कुछ कर सकते हैं हम लोग. This one is on you, boys. Exactly what I need. Thanks. Okay. The crowd gathers. The show begins. End of the world or not, I can't miss this gig. ऐसा लग रहा है अलग ही कॉन्सर्ट हो रहा है. The band. They're still playing their sad song.
ओके गाइस, तो काफ़ी लंबा चला ये कॉन्सर्ट, हालांकि काफ़ी मैंने नहीं दिखाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी था एंड एक ही वो चीज़ बजते जा रहा था, तो मैं सोचा ज़्यादा खींचते नहीं है, लेकिन जो भी था बहुत सही था। ओके, तो अभी गाइस हमें क्या करना है, अभी वो गिटार वाला तो चला गया, ये ले सकते हैं हम शायद। They won't be needing this anymore. ओके, ये ले लिया। Perfect. Another component for the quantum discriminator. ओके, तो ये हम लगा देते इधर। That should work. Yep. Neat. Almost there. One piece to go. Gretchen beats it. Time is running out. Synchronized tachyon impulses. Yes. Check. ओके, अभी चलते बाहर, एक और लास्ट पीस हमें चाहिए। ओके, तो गाइस ये अभी हम डिग करेंगे एंड लेट्स सी इसमें से क्या मिलता है। Let's get down to business. ओके, कुछ तो है इसके अंदर, पता नहीं क्या है, इतना शाइन कर रहा है, इतना ब्राइट। A space rock from outer space. Come on, be a good boy. Perfect. That's the last component of the quantum discriminator. ओके गाइस, तो फाइनली हमें लास्ट कंपोनेंट मिल चुका है एंड अब हम चलते हैं भाग के अपने रूम की तरफ कि फाइनली लास्ट कंपोनेंट लगा दिया हमने। Ooh, yes. I'll try with this one. Okay. That's it. Hans, we got it. The quantum discriminator. वाह, जो भी है बहुत सही लग रहा है। लेट्स सी अब क्या होता है। Gretchen is nearly there. The world will collapse. Projectory matrix. Check. Ha! It's working. Chapter 5, Exit Planet Earth. This place, fascinating. लेकिन गाइस अभी नहीं, चैप्टर 5 जो है ऑब्वियसली वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, विच विल बी द लास्ट पार्ट। यस गाइस, चैप्टर 5 जो है लास्ट पार्ट होने वाला है एंड आई होप गाइस आप सब लोग को ये चैप्टर 4 पसंद आया हो। काफ़ी लंबा है, काफ़ी लेंदी है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हमें कलेक्ट करनी थी, बहुत सारी चीज़ें हमें एक्सप्लोर करनी थी, बहुत सारे लोकेशंस हमने देखे अलग अलग, तो काफ़ी डिफरेंट था ये चैप्टर एंड आई होप गाइज यू ऑल लव्ड दिस अमेजिंग चैप्टर 4 एंड दिस अमेजिंग गेम। तो मिलेंगे बहुत जल्द लास्ट पार्ट के साथ, लास्ट वीडियो के साथ ऑफ दिस गेम ट्रूबरब्रुक। तो अगर अच्छा लगे देन डू हिट द लाइक बटन गाइज, कमेंट कीजिए, आपकी रिएक्शंस बताओ ये पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में एंड ऑल्सो डू शेयर, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सबके साथ एंड ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब कर देना गेम स्टार को, ताकि जो है बहुत सारे अमेजिंग गेमिंग कंटेंट्स, स्पेशली मोबाइल गेम्स की जो कंटेंट है वो मैं लेके आऊँ, गेम प्ले कंटेंट्स। तो टिल देन गाइज विल सी यू सून विद द लास्ट वीडियो। Till then, take care and stay happy guys. See you guys.